Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel. This is Devjani and you are watching Devjani classes. My dear students, now we are going to learn class 6 SST chapter 14 economic activities around us. आम previous chapter रे the value of work रे जानी थिले तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन तो बर्तमान आम इकोनॉमिक एक्टिविटीज रो क्लासिफिकेशन विषय पढ़ा तो ये चैप्टर आम मैंने पढ़ा हाउ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लासिफाइड व्हाट डिफरेंशिएट दिस एक्टिविटीज टू बी ग्रुप्ड इनटू सेक्टर्स हाउ आर द थ्री सेक्टर्स इंटरकनेक्टेड केमती भाव में जो तीन सेक्टर अच्छे से केमती परस्पर सहित इंटरकनेक्टेड तो don't further delay, start today's class. In chapter 13 we learned about two types of activities, the economic and non-economic. That economic activities create monetary value are called economic activities. जो थिरे आमर मनी एक्सचेंज हुए सेटा होची इकोनॉमिक एक्टिविटीज. वी आल्सो लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. आमे मध्य पढ़िचिले नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज रो गुरुत्वटा कौन कौन इम्पोर्टेंस रही केमिति एथिरे आमर सेल्फ सैटिस्फैक्शन मिलुची और ग्रेटिट्यूड मिलुची. टू अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटीज बेटर we will learn how economic activities are classified and what differentiates them in this chapter. Over the decades, the number of economic activities has increased tremendously. तो कितनी दशंधि परे एबे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत भाव में बढ़ी जाइए. सबुआड़े समस्ते कार्य काम करुछंती एवं इकोनॉमिकली समस्ते प्रोग्रेस करुछंती. फॉर एग्जांपल अर्लियर मोस्ट पीपल वेर इन्वॉल्व्ड इन एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर. तो पुराना समय माने आग काल लोक मैंने बेसी समस्ते एग्रीकल्चर काम करुले. तो लाइफ स्टॉक रियरिंग प्रोडक्शन ऑफ टूल्स पटेरी एंड वीविंग क्लॉथ. तो लुगा बुणा पात्र तैयारी करबा एथिरे से मानक समय काटुले. तो वर्तमान आज सोसाइटी इज प्रोग्रेस्ड वर्तमान जेहेतु सोसाइटी बहुत डेवलप करिछि द नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज थ्रू व्हिच पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड्स इंक्रीज्ड वास्टली. तो सेमानकर जीवन धारण पाई वर्तमान मैक्सिमम लोक माने कोन इकोनॉमिकली एक्टिव अछन बा इकोनॉमिक एक्टिविटीज करूछंती. टुडे देयर आर डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज manufacturing computers, mobile phones and drones, working in banks, schools, hotels, driving various types of vehicles for transportation, making furniture, tailoring clothes, using machines, creating software, repairing refrigerators and washing machines, etc. ए सबू वर्तमान बहुत गुड़े काम करने अच्छी. तो जेहेतु आग काल लोक मैंने किसी कम ही करना से बेसी एग्रीकल्चर कि माटी पात्र तैयारी करवा यही सब छोट मोट कम करें तो फाइनेंशियली से इंडिपेंडेंट हो पार नथिले से पाखे बहुत पैसा नथिला. तो वर्तमान लोक मान पाखे बहुत काम अच्छी तो से माने आर्थिक दृष्टि स्वच्छल. क्लासिफाइंग ऑल दिस एक्टिविटीज हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ दे फंक्शन and the links they have with each other. The classification of economic activities into economic sectors. तो आमे जेबे इकोनॉमिक एक्टिविटीज रे इकोनॉमिक सेक्टर से तार आमे क्लासिफिकेशन करे से केते प्रकार रे इकोनॉमिक काम सब. Some economic activities share similar characteristics and based on this they can be grouped together or classified into broader groups called economic sectors. तो इतनी सब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स रही तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से ग्रुपिंग करवा
ताहले आमे टोटली कहबा इकोनॉमिक सेक्टर्स कहबा। तो 3 मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इकोनॉमिक सेक्टर्स। तो ये इकोनॉमिक सेक्टर्स को आमे 3 भाग रे विभक्त करबा। गोटे होची प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। द इलस्ट्रेशन ऑन द फेसिंग पेज मैप्स out the broad activities under these categories. तो फर्स्ट आमे प्राइमरी एक्टिविटीज देखिबा। Those economic activities in which people are directly dependent on nature to produce goods are known as primary activities or primary sector economic activities. तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज रे लोक माने डायरेक्टली निर्भर करते नेचर उपरे किसी जिनस को तैयारी करबा पई डायरेक्ट नेचर उपरे डिपेंड करती, तो ताकू आमे कहू प्राइमरी एक्टिविटीज। तो आगु आमे देखिबा एग्जांपल सहित। फॉर एग्जांपल वर्क इन्वॉल्विंग कल्टीवेशन of grains and vegetables from agricultural farms, collecting wood from the forest, extracting coal from mines, fish from fisheries, जोटा कि आमर कल्टिवेशन माने शस्य अमल करवा, वेजिटेबल्स करवा एग्रीकल्चरल फार्म्स रे, तो वुड कलेक्ट करवा जंगल रु, एक्सट्रैक्ट कोल्स फ्रॉम माइंस रु कोल कोयला उत्पादन करवा, तो माछ चाष करवा एग फ्रॉम पोल्ट्री फार्म्स। यही सब काम गुड़ा हूँ प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एगुड़ा को सब आम कहूँ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज, कहना ये सब डायरेक्टली इन्वॉल्व हो नेचर सहित। द मोस्ट कॉमन प्राइमरी एक्टिविटीज आर एग्रीकल्चर। सबुठ इम्पोर्टेंट प्राइमरी एक्टिविटीज काम हूँ कौन कहल ना एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, रेजिंग लाइफ स्टॉक्स, फॉरेस्ट्री, ये सब। तो बिलो आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज विद इन द प्राइमरी सेक्टर्स। देखो किसी प्राइमरी सेक्टर्स एक्टिविटीज रो देइछि काम केमिति ग्रीन हाउस फार्मिंग, एटे माइनिंग, फिश फार्मिंग, फिशरी आउ फॉरेस्ट्री, रेजिंग लाइफ स्टॉक्स। ओके, think about it. Can you think of any primary activities that you may have seen in the past? Past तुम्हें देखी थिबा किसी primary activities तुम्हार मने अछि कि? What are the natural resources used in these activities? Name two of them and discuss your experience with your classmates. कौन सब तुम प्राइमरी एक्टिविटीज काम देखीच से तुम कौन सब नेचुरल रिसोर्सेस तुम यूज करिच से एक्टिविटीज कि ऑब्वियसली तुम एग्रीकल्चरल फार्मिंग देखी से तुम कौन नेचुरल रिसोर्सेस यूज करिच से नेचुरल रिसोर्स कौन यूज करिच ना बुलक। मेनली आमे फार्मिंग से बुलक काट यूज करुले नहीं, ये सब जो नेचुरल रिसोर्स थिला। नेक्स्ट सेकेंडरी एक्टिविटीज। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज रे आसले कौन ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज in which people are depend on outputs of the primary sector and transform them to produce goods are known as secondary activities or secondary sector economic activities. तो आमे सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या कहबा ना प्राइमरी एक्टिविटीज रो जहाँ प्रोडक्शन हबो ताकू आमे रॉ मटेरियल भली यूज करिकी जो जिनस तैयारी करिबा ट्रांसफॉर्म करिबा ताकू आमे सेकेंडरी एक्टिविटीज कहबा। आमे जेउ जिनस रो माने प्राइमरी एक्टिविटीज रो प्राइमरी सेक्टर रो आमे रॉ मटेरियल्स भाबे यूज करी जो प्रोसेसिंग करे किछि न्यू थिंग्स तैयारी करू ताकू आमे सेकेंडरी एक्टिविटीज कहथौ। The secondary sector includes the construction of buildings, roads, etc. and providing utilities like water, electricity, gas and other such necessities. It also includes the manufacturing of products in factories and production units to process raw materials from the primary sector into some other form that can be further sold or consumed. यार अर्थ होची आमे जेमती कि इलेक्ट्रिसिटी व्यवहार करिबा माने वाटर को यूज करिकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करिबा, गैस यूज करिबा, तापर फैक्ट्री रे आमे जहाँ सब प्रोडक्शन जहाँ सब प्रोड्यूस करूछे रॉ मटेरियल यूज करिकी फैक्ट्री जेकोसी जो जिनस आमे तैयारी करूछे। या छड़ा
ताको आम तैयारी करी आउ थे व्यवहार कर ताको बिक्री भी करिपरिबा ताको आम कह से सब जिन को आम कह सेकेंडरी activities. Some examples of secondary sector activities include the processing of grains obtained from agricultural fields to make flour in mills. माने आमे जेमती एग्रीकल्चरल फील्ड्स रु किछि ग्रेन संग्रह करी ताकू आमे प्रोसेसिंग करी आमे अट्टा फ्लावर्स मिल फ्लावर्स राइस ए सब तैयारी करबा को आमे सेकेंडरी एक्टिविटीज कहि थाउ. Extraction of oil from groundnut and processing of tea leaves to derive tea माने चा गछर पत्र रु आमे चा पत्ती तैयारी करिबा ता छड़ा ऑयल बाहर करिबा नट रो ए सब होची हमर सेकेंडरी एक्टिविटी. Similarly, wood from the forest is converted into furniture and paper. Cotton is used to make clothes माने कटन आम कपा नहीं आम से कपड़ा तैयारी करिबा तापरे काठ संग्रह कर से आम फर्निचर तैयारी करिबा ए सब स्टील आयरन फ्रॉम आयरन ओर ए सब होची हमर सेकेंडरी एक्टिविटीज रे एग्जांपल जेमते ऑटोमोबाइल्स लाइक कार्स ट्रक्स एटसेट्रा. थर्ड आसिला हमर tertiary activities. All those economic activities that provide support to people involved in primary and secondary activities are called tertiary activities. Means आमे जहाँ सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज जमती कि प्राइमरी और बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को लगे आमे सपोर्ट नहीं आमे जहाँ करूँ सेटा हला टर्शियरी एक्टिविटीज. ताको एग्जांपल्स हम बुझौचे. Just for example, the driver of a truck transports grains and vegetables from the farm to a factory or the market. आर माने होची आमरो प्राइमरी सेक्टर रो किछि रॉ मटेरियल्स नेले ताको सेकेंडरी एक्टिविटीज रे कोन हैला ना सेटा प्रोसेसिंग हैला तापर ताको ट्रांसपोर्ट होबो बिक्री होबो यही सब कम जो मैंने करके ट्रक ड्राइवर ट्रांसपोर्ट कर ग्रेन को वेजिटेबल्स को फैक्ट्री रू मार्केट को तो यही सब कम गुड़ाक बोथ प्राइमरी सेक्टर आउ सेकेंडरी सेक्टर टुगेदर माने एकाठी कि जो कमटा जोड़ा बाहर जो प्रोडक्टा तो से प्रोडक्ट को वर्तमान जी नहीं कि मार्केट रे पहुँचाऊँगी से टर्शियरी सेक्टर टर्शियरी एक्टिविटीज से कमटा हो टर्शियरी एक्टिविटीज. खाली सेतिक भी नुह द फ्रूट और वेजिटेबल्स भेंडर सेल द फार्म प्रोड्यूस टू हाउस होल्ड कंज्यूमर्स जो मैंने बिक्री भी करुँच से टर्शियरी एक्टिविटीज रे जाउछंती. सिमिलरली डॉक्टर्स खाली सेतिक भी नुह बिक्री करबा सेलिंग कि माने किना बिका भी नुह जो मैंने चाकरी करुँच मैंने सर्विस जॉब करुँच आउ जो मैंने डेली वेजेस पाउछंती से माने टर्शियरी एक्टिविटीज रे जिबे. The nurses, teachers, lawyers and pilots provide their services to those who need them. There are technicians who repair and service electronic items including mobile phones, televisions, mechanics who repair vehicles like cars and tractors. जो माने कार ट्रैक्टर मध्य रिपेयर करुँच साइकिल भी रिपेयर करुँच इलेक्ट्रिशियन ये सबू होउछंती कुतरे जिबे टर्शियरी एक्टिविटीज अंडर रे जिबे. दिस सर्विस मेक आवर लाइफ इजियर. सिमिलरली कम्युनिकेशन सर्विसेज थ्रू मोबाइल एंड इंटरनेट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विस एट होटल्स रेस्टोरेंट्स banks schools hospitals airports shops warehouses etc are all examples of tertiary sector economic activities. जहाँ सबू काम रहिला से सब है टर्शियरी एक्टिविटीज रे जाउची जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो माने डायरेक्ट काम होनी नेचर को यूज करबा किछि डायरेक्ट काम करूना सेटा डायरेक्ट काम जोटा हो सेटा प्राइमरी एक्टिविटीज आउ ताकू यूज करिकी आम जो काम होला सेटा होला सेकेंडरी एक्टिविटीज जोटा प्रोडक्शन हैला बस ताकू किना बिका
ताको ट्रांसपोर्टिंग करवा ये सब टर्सियरी एक्टिविटीज यह छड़ा जिते प्रकार सब जॉब रही तापरे डेली वेजेस रही रिपेयरिंग शॉप रही सब आसीज आमर टर्सियरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडर रे दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर आउ टर्सियरी सेक्टर एक्टिविटीज को मध्य आमे सर्विस सेक्टर बोली कही थाउ। Interdependence among sectors. The three types of economic activities or economic sectors play an important role in the process of conversion of natural raw materials into finished products for final consumption. तो ये जो इंटरडिपेंडेंस अमंग सेक्टर्स जो तीन टाक सेक्टर रही परस्पर सहित इंटरकनेक्टेड कहीं आम नेचुरल रॉ मटेरियल्स रु पूरा फिनिश्ड प्रोडक्ट्स पाइबा पर्यंत जहाँ सब कम ये सब तीन टाक सेक्टर अंडर रे जाउछि। लेट अस गो ऑन इमेजिनरी एक्सकर्शन टू अ village in Anand district of Gujarat to study an interesting example where we will understand how the three sectors are interconnected and support each other. चलो गोटे एग्जाम्पल नवा एवं देखा आनंद डिस्ट्रिक्ट गुजरात रो आनंद डिस्ट्रिक्ट रे तो गोटे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल अच्छे जोटि कि तीन टाक सेक्टर परस्पर को केमती सपोर्ट करुँच इंटरकनेक्टेड अच्छे। Dairy cooperative from farm to plate. These days, farmers in Gujarat greet the day with the clicking of milk pails and the happy mood of their best friends. बर्तमान यही जो गुजरात रो चाषी माने तो तांकर दिन आरंभ करती गाई कामठू आरंभ गाईर कामठू आरंभ करके तो से माने गोमाता घरे रखती एवं से सबू तांको खाइबा को दबा तांको जत्न नबा एवं क्षीर आनिबा यही सब कम कर से बहुत खुशी होती से बेस्ट फ्रेंड बोली भाभी नियंती से माने काउ को देर काउज और बफालोज खाली काउ नुहे काउ आउ गाई महिषी उभय रखती। काउज हाव अ स्पेशल प्लेस इन द लाइफ्स ऑफ द फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज तांको फैमिली रे गोटे गाई हूँ गोटे सदस्य एवं से गोटे स्पेशलाइज दि जाए इम्पोर्टेंस से माने दियंती। द फार्मर्स मिल्क द काउज एंड सेल देयर मिल्क टू द डायरी नियर बाय एवं कृषक मैंने गाई टू क्षीर आणती और ताकू नहीं पाख माने पाख डायरी रे बिक्री करती। एट द एंड ऑफ द मंथ मास शेष दे गेट पेड फॉर द मिल्क बेस्ड ऑन इट्स क्वांटिटी एंड क्वालिटी एवं मास शेष से पैसा मिले क्षीर क्वालिटी और क्वांटिटी उपरे। हाउएवर दिस वाज नॉट द केस अबाउट 50 years अगो यही केसटा ये 50 वर्ष भीतर कथा पूर्वर कथा। This is the amazing story of a milk cooperative named Anand Milk Union Limited. अच्छा से आरंभ है गोटे अमेजिंग स्टोरी ऑफ कार अमूल कंपनी समस्ते घरे घरे परिचित अमूल यूज करुचे तो से गोटे इंटरेस्टिंग स्टोरी से स्टार्ट है। इन द अर्ली 1940s farmers in Anand district would sell milk to the neighboring village. 1940s रे जो गुजरात रो आनंद डिस्ट्रिक्ट रो चाषी माने तो पाख गाँव रे बिक्री करुथिले क्षीर। दे वुड हैव टू साइकिल और वॉक टू नियर बाय विलेज टू सेल द मिल्क अंडर स्कॉचिंग हीट से माने पाख साइकिल रे कि चाली चाली पाख गाँव रे सब बिक्री करुथिले। आज यू नो मिल्क स्पॉइल्स और कडल्स वेरी फास्ट इन हॉट वेदर। खरा दिने आम जाने जे क्षीर कौन शीघ्र नष्ट हो जाए फाटी जाए ना नहीं क्षीर छिड़ी गले तो दिस वाज अ लॉट ऑफ इफोर्ट बहुत कष्ट करा पड़े फॉर द स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी दे वुड अर्न किसी अल्प टंका रोजगार करने से बहुत कठिन परिश्रम करा पड़े। सो दे डिपेंड ऑन पीपल कॉल्ड मिडलमैन से गोटे लोक पर डिपेंड करते मिडलमैन बोली कहते हु वुड बाय द मिल्क इन बल्क एट मच प्राइसेस फ्रॉम द फार्मर्स एंड सेल इट इन द मार्केट। तो सी किसी पैसा से किन नहीं मार्केट रे बिक्री करे। मेनी टाइम्स द फार्मर्स फेल्ट चीटेड हारास्ट बाय द मिडलमैन। ए मिडलमैन बहुत थर चाषी मान को हैरान करे। तो ये भिडियोटी बहुत लंग हो जाऊँगी तो नेक्स्ट पार्ट रे आमे अमूल रो केमिति एस्टाब्लिश्ड हैला ता विषय डिटेल्स रे पढ़िबा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।